Yes, hello everyone. Hope you are doing good and welcome back. Let's start with lecture number 8 and we'll continue with the word problems of factor set 1.5. Okay, and let me just share my screen. I hope my screen is visible and let me just take the slate and pen and we are here with question number 3rd. So question number third is very one of my very favorite and बोलते ना ये questions ऐसे questions मुझे बहुत पसंद है. I have some turn out for such questions. So the question is very easy, but कभी भी याद रखना इसमें अपने को बोला है द सम ऑफ फादर एज मतलब एक तरफ पापा की उम्र का बात कर रहे हैं एंड एक तरफ सन एज मतलब कि बेटे का या बच्चे की उम्र का बात कर रहे हैं. ये क्वेश्चंस में कभी भी सन का एज will not be greater than फादर का एज. ठीक है, सन का एज हमेशा फादर के एज से छोटा रहेगा. ये हमेशा याद रखना. ठीक है, पता चला सन का एज बड़ा फादर का एज छोटा, फिर लगा लो वही बैकग्राउंड म्यूजिक सारे मीम्स के. एनीवेज, just kidding. I'll switch off my video. We'll read the question, right? The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present age. Find the present age. किसका present age? दोनों का, father का and son का. ठीक है? I'll just switch off my camera. Okay. ठीक है. So let's go ahead. स्टेप एक बार रिवाइज कर लो फटाफट. मैंने कौन से स्टेप्स बोले थे तुमको याद रखने को कि during word problems you can always remember these steps. So practice at 1.5 ka we are solving question number 3rd. Hope this software is working properly. थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? Let's check ना. Third. Yeah, perfect. Thickness is perfect. ठीक है. So what we want to find या जो अपने को पता नहीं है उसको हम लोग assume करेंगे variables में. So let the father's present age, let the father's present age be x. ठीक है, तुम लोग सन का भी ले सकते हो, नेवर माइंड. एंड लेट द एक्स ईयर लिखो टू बी मोर प्रिसाइज, एक्स ईयर. फिर एंड सन प्रेजेंट एज भी वाई ईयर. ठीक है, एंड द सन प्रेजेंट एज बी वाई ईयर. समझा इधर तक? Now, just try to read the condition. The sum of father's age and twice his son age is 70. अभी तुमको ये कॉन्सेप्ट समझा रहेगा. Twice the father's, twice the son's age मतलब 2y and father's age का sum. तो from first condition या according to first condition, according to according to first condition, according to first condition, x plus 2y is equal to 70. Let this be your equation number 1. वो मेरा 70 90 के जैसा दिख रहा है. I so sorry. I am apologizing for my bad handwriting. Please cope up with that. Then next, if we double the age, ये देखो, if we double the age, तो double the age करेंगे तो just mention ना, double the age of father will be what? Double the age of father, which is going to be 2x. सन का तो इधर ले लिया 2y. ठीक है. So now from the second condition या according to the second condition, according to the second condition, according to the second condition, दोनों का एज मतलब फादर का एज डबल और सन का एज is equal to उनका सम इज 95. Let this be my equation number 2.
Look at both the equation, इधर 2y है, इधर सिर्फ y है, and इधर x है, and इधर 2x है. So it's your choice किसको multiply करना है. I will go with multiply equation 1 by 2. तो तुमको मिल जाएगा 2x plus 4y is equal to 140 if I'm not wrong. Now you can carry on subtraction. So subtracting equation 2 and 3. अब ये mention वैसा ही लिखना, ठीक है. 2 and 3. So 2x plus 4y is equal to 140. And here आ जाएगा 2x plus y is equal to 95. Subtraction कर रहे हैं my dear kids. It should be minus. Sign should change. ठीक है. So 3y is equal to 45 if I'm not wrong, right? So y is equal to 15. Sounds good. Now coming to our favorite step, substitution. Substitute y is equal to 15 in equation 1. Shall I go ahead? Substitute कर रहे हो, so you can do it any equation है, कोई भी equation में करो, never mind, मैं 1 में कर रहा हूँ. Is equal to 70. Therefore x is equal to 70 minus 30 and x is equal to 40. Now comes the final answer. That is the father's present age. The father's present age is 40 years and the son's present age and the son's present age is 15 years. Okay, is 15 years. So बच्चा 15 साल का है एंड पापा 40 years के, ठीक है. अरे समझा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है. तो इधर हाईलाइट नहीं होएगा, वो वन नोट का फीचर है, जाने दो. सो सन का एज 15 years एंड पापा का एज 40 years, ठीक है. दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ठीक है. सो आई गेस आई विल रिकॉर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. सिंस इट्स ऑलरेडी 10 minutes, हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन भी 10 मिनट में कर लेते, इधर ही कर लेते. चलो फिर फिफ्थ क्वेश्चन एंड फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स एट क्वेश्चन आई विल रिकॉर्ड. सो कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, ये याद रखना कभी भी. तो थर्ड हो गया. फोर्थ, denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. If both numerator and denominator are reduced by 6, then find the fraction. Easy question. Easy मतलब सबसे easy question है. So this is your question number 4. Here it would be the denominator of fraction is 4 more. तो पहले तो अपने को denominator और numerator क्या है वो ही नहीं पता है, ठीक है. So let numerator of fraction be x. Let numerator of fraction be x and denominator be y. And denominator be y, ठीक है. Now as per the first condition, what is the first condition? The first condition is if the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. 4 more than twice its numerator. मतलब what is our twice the numerator? So twice the numerator मतलब कि 2x, ठीक है. And from the first condition what I will get? So according to the first condition, what I am going to get, according to the first condition, I am going to get y is equal to 2x plus 4.
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, 2x plus 4 is equal to y. Is it the standard form? No. So here it would be 2x minus y is equal to, वो 4 इधर जाएगा तो -4. Now pay attention. If 6 is subtracted, मतलब अगर दोनों तरफ से हम लोग reduce करेंगे 6, if 6 is subtracted from both, that is numerator and denominator, then the fraction becomes so and so. So ध्यान दो. So if you want, it's for your explanation, but if you want, you can always write. So if 6 is subtracted, if 6 is subtracted, my god, it's going to be tongue twister now. If 6 is subtracted from the numerator, and the denominator, then the numerator becomes x minus 6, and the denominator becomes y minus 6, isn't it? थोड़ा क्लैरिटी आया. Now coming back to our condition. So now, oh no, ये इसका ये लफड़ा है. According to नहीं चला. According to second condition, क्या मिलेगा? सेकेंड कंडीशन मैंने वर्ड्स में तो फॉर्मुलेट कर दिया है. So now we're expressing it into mathematical formulation. So y minus 6 is equal to 12 bracket में x minus 6. ठीक है. Y minus 6 is going to be 12x minus 72. So 12x minus 72. रुक जाओ. Just let me reduce the number of steps. अगर हो रहा है तो होने दो ना. तो क्या आएगा इधर? 12x minus 72 is equal to y minus 6. So 12x minus y is equal to minus 6 plus 72. तो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा है? 12x minus y is equal to 66. माय गॉड, ये इक्वेशन में बहुत मेहनत करवाया फाइंड करने में. ठीक है, बाकी सब इक्वेशन अच्छे से मिल गए, ये इक्वेशन में बहुत मेहनत देना पड़ा. ए बब्बा, इधर इक्वेशन 1 कौन मार्क करेगा? 2x minus y is equal to -4. तो ये हो गया 1 and 2. नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट 1 and 2 ना, या कुछ और करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. इधर -y है एंड इधर -y हो जाएगा. डायरेक्टली करो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, subtracting equation 1 and 2. ठीक है. Here it would be 12x minus y is equal to 66. 2x minus y is equal to -4. So ठीक है. And I don't know why I did timber here, but I forgot. जाने दो. हाँ, साइन चेंज वही मैं बोल रहा हूँ. I'm getting something missing out. ये हो गया बराबर. माइनस प्लस प्लस, तो इधर मुझे मिल जाएगा 10x is equal to 70. Therefore, let me change the color. वो white इतना white black आंख में जा रहा है. Anyways, so substituting x का वैल्यू क्या आया? x is equal to 70 बटा 10. x is equal to 7. Now substituting x is equal to 7 in any of the equation you want. I am going to substitute in equation number 1. ठीक है. तो मुझे क्या मिलेगा? 2 into 7 minus y is equal to -4. 14 minus y is equal to -4. minus y is equal to one thing you can do. स्टेप बढ़ाने से अच्छा y को उधर फेंक दो एंड 4 को इधर लाओ. तो 14 plus 4 is equal to y. It means that 18 is equal to y. It simply means that y is equal to 8, if I am not wrong. Keep on cross checking because I am also not the guru. मतलब इतना भी मास्टर नहीं है. You need to have a practice. ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए इसका सबका. So now coming to one last and the final step, that is pinky ponky वाला final answer. The numerator
The numerator, even I can be wrong, so it's your duty to keep on checking. Numerator x is 7 and the denominator y is 18. ठीक है. Now, मुझे इसमें इंटरेस्ट था क्या? No, I have interest in the required fraction. So the required fraction is the required fraction is 7 upon 18. 7 upon 18. ठीक है. तो जो लोग लिख रहे हैं, ओ नो, सो सॉरी, आई गेस कुछ क्लिक हो गया है. सो those who are solving, पॉज कर लो वीडियो. बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट है एकदम मस्त छोटू सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा. ठीक है. सो यू ऑल कैन जस्ट सॉल्व. जिधर से तुम लोग लिख रहे हो, यू कैन पॉज एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग. नेवर माइंड. ठीक है. So that's all from my side for question number 5 and questions of questions from problem set. Question number 6 of question number 5. ये वाले particular practice set का question number 5. At present I am leaving up to you. At present I am leaving up to you. ये वाला. So this question number 5. At present I am giving you homework. Homework in the sense I am telling you to solve and come in my next class so that मैं जब पढ़ाऊंगा तब तुमको आइडिया तो आएगा कि क्या पढ़ा रहा है या which way of approach समझेगा. You will be able to relate things. Similarly, question number 6. ट्राई करना फिर आना सेशन में. ठीक है. So that it's useful for you and not me. समझा? Just copying from the screen won't be fruitful. And again, I repeat, in every class, every lecture, every session, let it be a normal session or a bridge course session, mathematics is only easy if you take it easy. तुम लोग उसका एक फेक इमेज बना दोगे कि मैथ बहुत टफ है, तो वो टफ लगने ही वाला है. Then no one can help you out. ठीक है. So we take a halt here, we take a pause. I'll just stop the recording and I'll stop my share screen also. Okay? Thank you everyone. Stay tuned. Take care and meet you all in the next lecture. Bye bye.